Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss about viruses, viroids, prions and lichens. So in the five kingdom classification of Whitaker, there was no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. So जो हमने five kingdom classification पढ़ा था, that was given by Whitaker. उसमें कहीं पे भी जो लाइकेंस थे या फिर जो दूसरे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस वायरॉइड्स और प्राइन्स को उन्होंने उस क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी जगह नहीं दी। सो यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition. So we all नो दैट कि जब हम बीमार पड़ते हैं स्पेशली जैसे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू इस टाइप की जो डिजीज होती हैं, वी ऑल नो दैट कि दे आर द वायरल डिजीजेज. सो वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग. सो वायरसेस जो हैं उनको ट्रू लिविंग बीइंग नहीं माना गया बिकॉज they do not have a specific cell structure. So if we understand living as those organisms that have a cell structure, so viruses में जो वायरस जो है इनमें specific जो cell structure हम पढ़ते हैं वो typical cell structure नहीं होता है. That's why they are considered truly they are not considered truly living. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. So they are non-cellular and they have a inert crystalline structure and live outside the cell. So in this image we can see that these are the outer covering of virus. That one is the nuclear material, either it is DNA or RNA. दोनों जो है वो कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते वायरस में. In this second image, that is bacteriophage. In the first one image is about tobacco mosaic virus. Now once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. So would you call viruses living or non-living? जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो वायरस होते हैं इनका खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता. दैट्स व्हाई जो ये होस्ट सेल है उसकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और उसके बाद में उसी में ही दे रेप्लिकेट एंड दे सर्वाइव. आफ्टर दैट दे किल द होस्ट. सो कैन वी कंसिडर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? सो नाउ वी कैन डिसाइड viruses could be considered living or non living. Viruses means venom or poisonous fluid. So virus का जो मतलब है, the literal meaning of virus is about poisonous fluid or venom. Now Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as a casual organism of the mosaic disease of tobacco. So Dmitry Ivanovsky ने सबसे पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से जो टोबैको का जो मोज़ेक डिजीज है that was happening. Now these were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. So इनका जो साइज था वो बैक्टीरिया से छोटा था because they could easily pass the bacteria proof filters. M.W. Beijerinck in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as contagium vivum fluidum. That is the infectious living fluid. Beijerinck M.W. Beijerinck ने 1898 में जो टोबैको के जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनसे एक फ्लूइड जो है उसके थ्रू जो हेल्दी प्लांट्स थे उनको इन्फेक्ट किया और एक नया जो पैथोजन था उसको आइडेंटिफाई किया और उसको उन्होंने नाम दिया वायरस. सो वायरस टर्म वाज कॉइन्ड बाय M.W. Beijerinck. Now and that fluid which was collected from the infected plants, it was called as contagium vivum fluidum. So infectious living fluid. And W.M. Stanley in 1935 showed that viruses
could be crystallized, and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cells. Viruses are obligate parasites. जो डब्ल्यू एम स्टैनले थे, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और बिकॉज जो इनका जो आउटर कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, सो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स. तो बेसिकली जो ये अपने होस्ट सेल के आउटसाइड दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग, inside the host cell they act as a living cell. Viruses are obligate parasites, so they need a host cell to survive. That's why they are obligate parasite. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. प्रोटीन जो है वो आउटर कवरिंग जो बनाता है वायरस की, उसके अलावा जो न्यूक्लिक और जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी वायरस में प्रेजेंट होता है. दे कुड हैव इधर आरएनए और डीएनए, या तो इनमें डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं वायरस में. वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. सो जो जेनेटिक मटेरियल है वो इट हेल्प्स to get infected. Now, in general, viruses that infect plants have a single stranded RNA. जो plants को infect करते हैं उनमें generally single stranded RNA होता है, but it is not specific. Viruses that infect animals have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. So जो animals को जो infect करते हैं viruses, they could have single or double stranded RNA or double stranded DNA. Bacterial viruses or bacteriophages, viruses that infect the bacteria. So जो bacterial viruses और जो bacteriophage हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. हमने जो इमेज देखा था ना, दैट दिस इज द इमेज ऑफ बैक्टीरियोफेज, मींस द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. So it could have a double-stranded DNA virus. The protein coat called capsid, made up of small subunits called capsomeres, जो वायरस का outer covering था, it is made up from protein, and this protein coat is called capsid, which is made up of small subunits. इन small subunits को हम capsomeres बोलते हैं because they protect the nucleic acid. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. जो capsomeres हैं they could arrange in helical, polyhedral and some other forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. जो common disease जो हम देखते हैं, these are the mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in human is also caused by virus. This is the most important question. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. So these are the various symptoms which we could see in plants. I would rather say these are the various conditions. Like mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing, stunted growth are the various diseases caused by viruses in plants. Come to the viroids. In 1971, T.O. Diana discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. T.O. Diana ने एक और infectious agent को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, which was smaller than the virus, जो वायरस से भी छोटा था, and it caused the potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. So it was a free RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses. So इसमें protein coat भी absent था, जो कि जनरली वायरसेस में हमने देखा था इस इमेज में कि जो आउटर कवरिंग वायरस का वो प्रोटीन से बना होता है, कैप्सिड, और उसके जो स्मॉल सबयूनिट्स थी, दीज आर द कैप्सोमियर्स. सो डायना ने इन्हें वायरॉइड बोला. द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो आरएनए जो था इट वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. नाउ कम टू द प्रायंस. In modern medicine, certain infectious neurological disease
were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. So मॉडर्न जो फिर फर्दर जो डेवलपमेंट हुए उनमें कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स भी मिले, स्पेसिफिकली दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। तो वहां पे जो कॉजिंग एजेंट थे दे आर abnormally folded proteins. The agent was similar in size to virus. इनका जो साइज था वो वायरस के सिमिलर था. These agents were called prions. So basically जो prions थे ये folded proteins थे and they causes neurological diseases and जो इनका साइज था वो वायरस के सिमिलर था. These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. So this was the specific disease which was caused by prions. इसका नाम है bovine spongiform encephalopathy, also called mad cow disease in cattle, and its analogous variant Jacob disease, that is the CJD in humans. Now lichens are symbiotic associations, mutually useful associations between algae and fungi. तो बेसिकली जो लाइकेंस क्या है, दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जो एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं. द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट. जो एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसे हम फाइकोबायोंट बोल रहे हैं और जो फंगल कंपोनेंट उसे माइकोबायोंट बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. सो जो एल्गल कंपोनेंट है ऑब्वियसली दे कंटेन chloroplast and some other pigments also. That's why they could be put into the category of autotrophic. But in case of fungal component, we know they lack pigments, so that's why they are heterotrophic. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So यहाँ पे जो lichens है इनमें basically algae और fungi एक symbiotic relation है. So जो algae है वो fungi के लिए food prepare करता है, जो fungi जो है वो shelter प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, एंड जो फंजाई है इट आल्सो एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी. नाउ so close is their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them. So अगर हम physically if we will see the lichens, so we are not able to identify that कि इसमें दो organisms हैं. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. It is very important question for exam point of view. जो lichens हैं they are good pollution indicator because अगर polluted area में इनका जो population है वो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा. So that's why they act as a pollution indicator.